Hi everyone. I think we are live. Yes, I can see we are live. So thank you very much for tuning in. And I would be live for another 20 minutes as part of our weekly wrap up. We'll take all the questions. Markets have started to show some great signs of recovery, and a lot of events happened last week, whether it is about Fed numbers, Japan numbers, then also gave away from us, a gift of a token of appreciation from us, which is the GoalFi branded T-shirt to all our investors who show expression of interest in that. And you can, as I mentioned, over the community chat, as well as in my previous video, whoever is happy to share their address with us, because we don't have your address details. The only thing you do when you subscribe is validate your KYC via PAN number. And in case you wish to get GoalFi branded T-shirt like the one I'm wearing, um, and you can, of course, let me know the color. We have two colors, black and blue. You can let us know your preference and share your details, and you can expect to receive that in the first week of April. I mean, somewhere around that time. We'll kind of closing all the expression of interest today, and whoever would respond on our chat number, which is chat.goalfi.app, which is a WhatsApp number, let us know, and we'll record your expression of interest, and ultimately we'll courier it to you. So that's the plan of action. And also, I'll take all your questions. We'll cover how the small cases are doing. There was a little hue and cry in last rebalance. काफी कुछ लोग खुश हुए जो नए इन्वेस्टर्स थे कि rebalance के बाद they could invest fresh money, and of course in the last week when markets were recovering, they started to seeing a positive sign. कुछ 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 क्या काफी इन्वेस्टर्स ने कंसर्न दिखाया कि रीबैलेंस करें नहीं करें. हमने रीबैलेंस को लास्ट टाइम स्किप किया था, आई मीन द लास्ट टू लास्ट टाइम, एंड इस समय जो रीबैलेंस किया, देयर वर टू रीजंस. एक, हमारा मंथली रीबैलेंस ड्यू था, आई मीन प्लान था, विच इज 19th ऑफ एवरी मंथ. सो 19th को हमने एज शेड्यूल्ड एज प्लान, हमने उसमें से जो थोड़ा वेटेज जो नीड था वो चेंज करके, जहां जहां मॉडल wherever our model suggested to have exposure, right, slight exposure in now large cap category, looking at the volatility, whether it is a value zone or it is a quality based portfolio or it is even the low volatility portfolio, वहां पे थोड़ा सा exposure हुआ है large में. बाकी we still are very very bullish on mid and small. मैंने बीच में एक वीडियो किया जहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट की बात करी, एंड ऑफ कोर्स that video title was also, is it a stress test for फंड हाउसेस और स्ट्रेस टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज काफी स्ट्रेस हुआ उसके ऊपर. फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फंड हाउसेस ने stop kiye lump sum investments, and that is another reason why there is some flow of money from one category of stocks to another category basis the market cap as the factor there, right? So वो सब हमने कंसिडर करा, अपना 19 को रिबैलेंस किया. अल्फा ब्लेंड पे काफी हमें फीडबैक आया कि then we I see addresses also started coming on our WhatsApp. So that's great. Let me also go to YouTube if people are watching. Uh, some Somehow it is showing me that it is private, but let me see if there's anyone on the chat that would kind of give me a confirmation that it is not a private video. Uh, It says comments are not supported on private videos. I don't think it's a private video. Let me see if it is really private or it's running out. Yeah, okay, this is not. This is a public video. How much downfall in portfolio we should be mentally prepared? Ravi Antar by saying color black. How can I get a t-shirt? Please drop your details on our WhatsApp, and absolutely will send you the t-shirt. So I'll answer your questions, Ravi. I see Ravi has tuned in. Ansar has tuned in. Arup has tuned in. So hi Swapnil, hi Sovik, hi Economics Nursery. Uh, right. So let's take. I mean, if you have any questions, of course, let us know. I'll answer, but I'll start answering questions here.
let's say if the world move from fiat currency model to community based currency, how will this impact equity market? Ravi ji, if you want to have the discussion, very happy to get into a discussion on that topic. But do you really need to really worry about at this stage of the world economy? Um, and how we are placed in terms of I mean of course अभी इतना आप देखो यूएस डॉलर और इंडिया करेंसी कहाँ मूव हो रहे हैं, आई मीन 84 85 लेवल्स, राइट, इट इज टचिंग. सो वहाँ पे एक वीकनिंग हो रहा है कहीं ना कहीं, एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन. बट फेयर करेंसी से कम्युनिटी बेस्ड करेंसी कब चेंज होगा, क्यों होगा, क्या रीजन है, उसका इक्विटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, and more of an intellectual topic more than it has any impact on your current investments or current forward looking next couple of years, right? So उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. If you would like to have one to one, feel free to book one to one with us, meet.goalfield app. Ravi is also asking how much downfall in portfolio we should be mentally prepared. देखिए मार्केट्स ऐसा कोई बेयर फेस में है नहीं. एक जो शेक ऑफ हुआ इन टर्म्स ऑफ नी ब्रेकिंग रिएक्शन आया 2 वीक पहले, of course your portfolio must be sitting in -10%, -15%, maybe -20% if you were very heavy on small cap, right? That way, which is totally kind of a volatility you can expect in Indian markets. When the Indian markets, there are pockets in lot of sectors in small and mid which are at very peak valuations. But Abibi, as you see, our small cases are still 70% small cap heavy. Reason being, if you look at our compositions, they are very, very high quality companies at right valuation, just waiting for, the kind of value. I mean, the market has to, of course, give the market, of course, has to give the price, right, to that value zone which they are right now they are placed in. अभी फॉल हुआ, ब्रॉडर फॉल हुआ, तो ऑफ कोर्स दी स्टॉक्स आल्सो गॉट इम्पैक्टेड एंड दैट्स वेरी नेचुरल. बट यहाँ पे हमने इसलिए लास्ट टाइम अपने अपडेट में बोला कि डू नॉट ऐड मोर और एवरेज इट डाउन, because you never know where is the kind of cut. Reason being, तो markets में हमने बोला, I think same thing I'll repeat. We told everybody that if you have 100 100 capital at your disposal, 50 capital should be deployed post elections, so that we exactly have the view of how the country shaping up in terms of the politics around it. And then, I mean, let that settle. And the 50 you have, right, you should still keep 25 with you, because अभी आप 25 इन्वेस्ट करो immediately. This is a great point to invest this 25, because आपको वो चीज सस्ती मिल रही है. अगर और नीचे जाता है, then you have still 25 more to add there. So इसलिए the money should be divided into three buckets rather. 100 का, if you have 100 rupees, say 1 lakh rupees, 50,000 रखिए आराम से, sit on cash. 50,000 में 25,000 immediately invest, no problem. 25,000, just wait and watch. It is okay to wait and then even buy at a higher price. Um, uh, Somebody is also pinging, because I can also access our chat room right now, and somebody is pinging right now that they are watching me, and so let me see who is pinging, and I'll just give me a second. So guys, just do not ping right now on WhatsApp. You can ping it after. I think somebody is continuously pinging. So Mehboob Alam is pinging. Mehboob Alam, you can wait for this live to get over and then share details. Okay, so that was the answer to Ravi. We should be prepared with 20-25% drawdown in kind of equity markets. And stop pinging on WhatsApp for Ravi, because I'm constantly getting kind of distracted there. Souvik, hi Souvik. Economics nursery, hi sir, this is a recovery or a dead bounce. नहीं यार, signs are positive. Of course, a lot of new investments are still being kind of hold in terms of the mutual funds inflow to lump sums into small cap funds. But अगर आप index level पे देखोगे, so index ने एक lower high तो बनाया है, rather एक lower low भी बनाया है in terms of the प्योर चार्ल्स डो higher high higher low structure theory. लेकिन
काफी सपोर्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. Sohail, hi. Ping after the session. Swapnil is saying SIP is best option in a small case. Yeah, SIP Swapnil does work. You have to make sure that you are not doing a SIP of less than the minimum investment amount in your basket. Example, if you are a investor in balance basket and that is a 25,000 ka basket, if you invest 25,000 ka multiple as SIP, it's absolutely great way, because that way you are able to invest the amount in that right proportion. In the proportion we kind of have assembled that basket. अगर आप वहां पे 5 लाख SIP करते हो तो इशू क्या होगा कि the system will try to buy the shares in a way that it can fetch you higher number, because ultimately India में fractional investing नहीं होती. So you can't buy a fraction of a stock. You have to still have the full amount to buy the stock. So अगर आप 5,000 का SIP करोगे, 2,000 का, 1,000 का SIP करोगे, so वो वही buy कर पाएगा जो 1,000 में मिलेगा. And that would not give justice to the portfolio, because वहाँ पे units नहीं है, वहाँ पे actual stock buy होता है. तो वहाँ पे I'll suggest, if you want to do SIP, you have to go in the way of waiting for the rebalance date and add in the same multiple of the minimum investment amount. Economics nursery, okay, हो गया. Dr. Chandramani Maurya ji, hello sir to you also. Swapnil said और अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन पार्ट पूछना चाहता था, आई थिंक वो सो अंसार इज सेइंग सौविक दास प्लीज कनेक्ट विद मी. अच्छा, सौविक एंड अंसार साथ साथ इसी थ्रेड पे बात कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट टू ईच अदर, व्हिच इज गुड. सुमित चौधरी इज आस्किंग व्हाट इज योर व्यू ऑन करंट मार्केट. I'm cautiously bullish. That's a very generic statement. Generally, all people you will hear in the industry will keep saying that they are cautiously bullish on the Indian markets. I am absolutely very bullish, right? In terms of Indian markets, forward looking. And you say kitna forward looking? Year or two forward looking as well. Um, okay, so my views on current market is it's a wait and watch kind of market where you do not put all of your chips, right? Keep your chips with you so that you can still play the game. And you're not completely invested. So आपके पास नीचे खरीदने के लिए, एवरेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगा, but also at the same time great opportunity to buy good quality companies at a lower price. So थोड़ा थोड़ा आप उसमें अपना 30% kind of amount you can still invest. But I am a very very bullish, optimistic. Markets are designed to go up, so not a problem at all there. And sir, I sir unhappy with previous rebalancing. If we continue with the previous portfolio without rebalancing, it will be better return. Ansar, I understand. I think I also got the message from the team that Ansar is very unhappy about the rebalance because some loss had to be booked in your portfolio, for example. The way small case solution works, every day new investor come. Every day we have new people who are subscribing to a small case and investing their money. I understand that people who have invested, say, from the time we have launched, they are sitting at great return, 40% return. People who have invested in February are sitting at 10% minus return. People who have invested just last week are sitting in, positive number. So uh, if you think from our perspective, um, I understand that it's sometimes unfair to investor who has invested in the period where timing is slightly off. But all of these things have no meaning in a long term of 6 to 9 months also, right? I mean, 9 months, 1 year, if you see, it won't matter that you have to rebalance because of the mandate which we had to kind of update, because the idea was, the model was suggesting that to have slight exposure to large cap. Right now, looking at where the money is moving, where the markets are maturing, I mean in terms of stability of the portfolio. So I understand that आपके टाइमिंग के हिसाब से वो आपको कुछ लॉस बुक करना पड़ेगा, किसी ने वहाँ प्रॉफिट बुक किया, राइट? पीपल हु आर already, if you think about where we have say reduced weightage, because in real terms we have not really removed coverage on any of those stock, right? Whichever was an alpha blend, एक नया stock ऐड हुआ, बाकी stock as it is रहे, कोई remove नहीं करा.
बट जब आप एक नया स्टॉक ऐड करते हो और आपको 20% वेटेज उसको देना है, तो कहीं ना कहीं से 20% वेटेज कम करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज 100% वेटेज। अब जब हमने जब वो 20% वेटेज कहीं से रिमूव किया, विच सिंपली मीन दैट टाइमिंग का है, राइट। यहाँ पे अब किसी का वो 5% पोर्टफोलियो उस स्टॉक का से, किसी के पास 15% था, 5% कम हुआ, किसी का वो 5% प्रॉफिट बुक हुआ है, राइट, एंड जो बचा हुआ था क्योंकि वो नवंबर में इन्वेस्ट किया था, और ऑलरेडी उस स्टॉक पे एक अच्छे नंबर पे था, अगर वो एक पुराना स्टॉक चला रहा है तो, और किसी ने ऑब्वियसली उस पे लॉस बुक किया है क्योंकि उसने अभी भी इन्वेस्ट किया था, राइट, एक हफ्ता पहले जब वो, एंड ही हैड टू टेक द इम्पैक्ट ऑफ 10%। बट एक एक थोड़ा सा आप उस प्रोसेस को देख समझने की कोशिश करोगे ना, आई टोटली गेट इट, राइट। हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स आए कि हम स्किप कर देते हैं रीबैलेंस, स्टॉक्स तो अच्छे ही हैं, अम, इसको रीबैलेंस को स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो तब हम रीबैलेंस को ले लेंगे। इट इज टोटली एट योर डिस्क्रिप्शन, राइट। मेरा काम है, मैं अंसार आपके लिए भी वो काम कर रहा हूँ, आप मतलब मैं आई हैव टू वर्क से फॉर टू मेक श्योर दैट अंसार एज अ कस्टमर इज हैप्पी। बट आप ये तो सोचो, मेरे पास I mean, growing numbers in terms of the users and all of your support. अगर हमारे पास 1200 इन्वेस्टर्स हैं, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, एंड और हम नीड बेसिस इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसमें और थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि आप आज ही आए, और अंसार के लिए वो नीड बेसिस राइट डेट है टू रीबैलेंस, बट जो कल आया है उसके लिए तो बहुत ही अनसर्टेन था क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि कल रीबैलेंस होने वाला है। तो वहां पे डेट का हमारे लिए हमेशा से रखना कि हम ट्यूसडे मॉर्निंग रीबैलेंस करते हैं, नीड नहीं होगा तो स्किप करेंगे, वो भी पब्लिश करते हैं। लास्ट टाइम जब स्किप किया था तो -7% पोर्टफोलियो स्मॉल केस का था, स्किप किया तो वी डिडंट बुक, राइट। इस बार 3% बुक किया, 3% बुक किया, अगर आप अल्फा ब्लेंडेड हुए तो हमने 3% बुक किया। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई नाम हमने चेंज रिमूव ही नहीं किया है, वी हैव नॉट स्टॉप कवरेज इन अल्फा ब्लेंड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक, जस्ट दैट रिड्यूस किया है वेटेज, राइट। सो आई अंडरस्टैंड आंसर, बट वीकली रिमेंसिंग हम लोग वैसे भी आपको पता ही है कि रिमूविंग एंड बाइंग तो नहीं है आंसर, हमने कोई भी स्टॉक रिमूव नहीं किया है, एज यू कैन सी फ्रॉम द रिपोर्ट यू रिसीव ऑन योर ईमेल इन टर्म्स ऑफ द रीबैलेंस रिपोर्ट। सिर्फ नाम ऐड किया है, नाम ऐड करने की वजह से रीबैलेंस में आपको कुछ स्टॉक्स सेल दिखाएंगे क्योंकि वेटेज कम होगा, क्योंकि नया स्टॉक ऐड हो रहा है, अदरवाइज रिमूव हमने नहीं किया है। Caustic is saying 490 SIP is good, or no sir, some stocks were added in Feb and you remove percentage weightage। आप आंसर वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परसेंटेज वेटेज हमने रिमूव नहीं किया, हमने एक नया नाम ऐड किया, राइट। पोर्टफोलियो अभी मान लीजिए 6 से 7 नाम पे आ गया है, आपने एक नया नाम ऐड किया, उसको 20% वेटेज दिया, तो पोर्टफोलियो कैन नॉट बी 120%, पोर्टफोलियो विल स्टिल बी 100%। 100% वापस लाने के लिए आपको कहीं से वेटेज कम करना पड़ेगा। जब आप वेटेज कम कर रहे हो तो आप उस स्टॉक से अपनी कवरेज नहीं हटा रहे हो, आप उसी बट आप थोड़ा सा आपको क्वांटिटी बेचना पड़ रहा है उसका, टू काइंड ऑफ accommodate the new name। That's how it would work, right, if you think logically from a 100% perspective। Ravi is asking, I have 25 lakh lump sum amount, I am thinking to invest in Alpha Blend in 24 months, any suggestions? Okay, Ravi, suggestion is, as I said, 50% keep it money, keep it for the second half of the year, and you want to invest in 24 years, so I'll say keep 50%, over, you can put into liquid money, I mean liquid Bs, for example, so that you still earn a couple of percent, in liquid, in that instrument, I mean liquid funds could be good, liquid Bs could be good, I mean not a recommendation, but liquid B में आप पैसा पार्क कर सकते हो, and then you can plan this entire investment into 4 phases, which is, you can start with 20% today, your 5 lakh today, because markets are at the right number. You should always keep 5 lakh additional when markets, if they further fall, you have that another 5 to continue to invest in the good quality companies at a lower number. Then wait for another 5 for post election, second half of the year. So then 5, 5, 5, 10, 15 is invested. See how the second half kind of work out, and then in a way, so you have broken your 25 into 2 years, 15 into first year, 10 into second year, 15 again, 5 now. I think 5, just see if markets are further going down, you have an option to add more, or if the markets are
shaping up in the up direction, you can add that where as well, because that also is not really highly priced market. It will come back to its mean, pull back. I mean, it will have a pullback from to the mean, and then remaining five you can have after elections. Hi Naeem, how are you? I am fine, Naeem. Thank you. How much should I expect return from balance basket? नंबर मुझे नहीं मालूम नहीं कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जितना रिटर्न बेंचमार्क देगा उससे ऊपर ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं कोशिश तो यही है कि वी शुड बी एबल टू बीट द बेंचमार्क बाय सम गुड मार्जिन। सो जितना निफ्टी टोटल मार्केट रिटर्न बनाएगा उससे ऊपर हमें रिटर्न बनाने की कोशिश करनी है, एंड दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। Mahbub is saying, I just heard about an attack on Moscow. Yeah, it was a morning, sad news to hear that there was an attack. Uh, हमारे मार्केट पे सीरियस कंसर्न तो आई डोंट सी एज अ डायरेक्ट सीरियस कंसर्न। आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर quite mature and have seen and been seeing so many wars right on and around, so उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है। बट जैसे अभी बात हो रही है ऊपर से, यही क्वेश्चंस का आंसर मैं यही बोल रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा कैपिटल इस समय कैश में रखिए, बिकॉज देन you always have an opportunity to add there, right, in case market has a further drop. All right, सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी आ रहे हैं रिस्पॉन्स। जस्ट गिव मी सेकंड, which is fair. Anyone, any question you would like to ask me? And yes, so again that Golfi t-shirt वाला, अगर हमारे जितने भी आप investors हैं in any of our six baskets, if you wish to share your details in terms of your, of course, your communication address, um, uh, please do um, do message. Was the recommended amount? What is the recommended amount? यार ये इमोटिकॉन आ रहा है तो मुझे वो कौन पर स्मॉल केस। मुझे लगता है इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप करने आए हो तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2-3 लाख रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे जो फीस होती है वो और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो आपने फीस दी है स्मॉल केस के लिए, वो वर्थ नहीं होता। तो एटलीस्ट इतना तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक इतना पैसा आपके पास इकट्ठा नहीं हुआ, जब तक जस्ट स्टार्ट विद SIP, and start with maybe a recurring deposit and save that money. So Arup is saying some stocks down by 20%, some stock will take time. Yeah, Arup, but ऐसा not necessary। हाँ, of course टाइम तो लगने वाला है, राइट। अच्छे खासे एक नी ब्रेकिंग रिएक्शन आया मार्केट में तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, और अभी जब तक इलेक्शंस है वॉलेटिलिटी भी रहेगी। बट I think as long as you are in good companies, your money is safe, I'm very sure, and believe in Indian economy, believe in Indian markets. And they are designed to go up, right? As you all say, and just give it time. Everything. I think what Ansar did not appreciate about this whole episode is कि टाइम नहीं दिया हमने, रीबैलेंस कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा था खाली कि एक थोड़ा सा लॉस बुक करके आपको वहां पे लॉस इसलिए बुक हुआ नोशनली बिकॉज आपने वेटेज कम किया, बट वहां पे किसी ने, बहुत सारे यूजर्स ने अपना जो ऑलरेडी उनका कुछ कैपिटल बन रहा था उन्होंने उसको बुक किया, राइट। उनको वो प्रॉफिट मिला। जो 5% अगर वेटेज कम किया है अंसार किसी पोर्टफोलियो में, तो वहां पे जो इन्वेस्टर का 20% उस पोर्टफोलियो में लगा हुआ था, किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं उस पोर्टफोलियो में, 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में है, तो वहां पे दैट 15% जो वेटेज था 20 लाख में, जो अमाउंट प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बुक करने का मौका मिला कि मार्केट और ना गिरे, तो वो पैसा थोड़ा सा यू कैन टेक आउट फ्रॉम द टेबल। मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है हमारे केस में अभी तो, बिकॉज वी आर अ स्मॉल टीम एंड द AUM इज नियरली 20 करोड़ फॉर एग्जांपल। सो अभी तो व्हेन इंडिया तब स्मॉल केस का एक मैक्स अमाउंट का इशू आता है व्हेन से द AUM इज क्वाइट बिग एंड लिक्विडिटी का इशू है कि आप एक बार रीबैलेंस कर रहे हो एंड आप इतने करोड़ का माल बेच रहे हो उसी मिनट पे, उसी देन द इशू अराउंड लिक्विडिटी में कम, कि इतने बायर सेलर्स नहीं मिल रहे हैं। बट अभी तो हम एक छोटा स्मॉल केस है एंड दैट वे अभी तो वी हैव नो कैप। We also have people who came and invested crore worth of their money, right? Organically, 60 lakh kahin pe, 40 lakh kahin pe. So no cap there as of now. But हाँ, जब AUM बड़ा हो जाएगा, once we are 100 crore in a fund, we of course have to start thinking कि हम उस small case को
पॉज करें एंड देन एक और स्मॉल केस पैरेलली लॉन्च करें, जैसे कि रीबैलेंसिंग का डेट डिफरेंट हो, जिससे कि लिक्विडिटी का जो भी कंसर्न है वो सॉल्व हो सके। ओके, एनीवन, एनीबडी, एनी क्वेश्चन, shall I, is it okay? Anyone, any questions? Any last minute questions? Pawan, hope I answered your question. Arup, hope I answered your question. Okay, guys, thank you for tuning in. Have a happy weekend. If we are playing Holi on Monday, happy Holi in advance. एंड मार्केट अगले हफ्ते 2 दिन शॉर्ट है। आई मीन मंडे नहीं है, छुट्टी है, एंड आई थिंक फ्राइडे भी छुट्टी है। सो 3 days हैं, लॉन्ग लंबे वीकेंड आ रहे हैं इस वीकेंड पे भी, अगले वीकेंड पे भी। So take some time out, go out. So how much drop in portfolio has to happen? How much drop in portfolio has to happen to consider move to cash equivalent? Okay, I'll take this question as last question, Ravi. Uh, देखिए, ड्रॉप डिपेंड करेगा कि ड्रॉप इज अ टेम्पररी ड्रॉप in terms of in terms of this kind of movement of money from one kind of asset class or from one one kind of market cap to another market cap, or is it driven by a global event which has no clean kind of view to it, right? For example, जब कोविड हुआ था, तो कोविड में अर्ली साइंस आने लग गए थे, राइट? काफी अक्टूबर से नवंबर में कोविड 19, राइट, 19 तक। जब मार्च आते आते 4 महीने हो चुके थे, तब जाके जो एक फॉल आया था, राइट, कोविड 2020 का जो फॉल आया था, मार्च का फॉल। सो जब कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट ऐसा लगेगा, ये जो करेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप कैश में मूव करने का कोई ऐसा इमीडिएट नीड नहीं है। यू कैन कीप सम कैश। you there's no meaning right now to convert your portfolio into cash equivalent. Of course, keep 20% cash with you, 30% cash with you, so that you can ऐड मोर। बट ऐसा कोई ग्लोबल इवेंट नहीं है जहाँ पे आपको कैश में मनी पोर्टफोलियो मूव करना पड़े, जहां तक मुझे अभी लगा। बट हाँ, मार्केट्स आर सुप्रीम, विल फॉलो व्हाट दे इंडिकेट। जनरली ड्रॉप कितना परसेंटेज होगा मुझे मालूम नहीं। बाकी अगर 25% का फॉल है, आई मीन टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कैप स्पेस। लार्ज कैप में वैसे भी इतना नंबर आपको दिखेगा नहीं, एंड इंडेक्स तो वैसे भी आप देखोगे 2% का फॉल इंडेक्स में होगा, तो इट विल साउंड लाइक कि कितना फॉल हो गया है। So that way, I think we are placed in the right position right now. All right, guys, thank you all for tuning in, and I see on our company WhatsApp number a lot of you are pinging. So thank you. You will get, so once we close our financial year, then we'll dispatch the t-shirts. So wait, it will take some time, maybe 10 days, 15 days before it arrives. But yeah, absolutely. Just register, tell us your email address which you have used for subscription, and tell us the color of your choice, black or blue, and tell us your size from S to double XL. And that's our quarter end thank you gift to you. Okay, take care, guys, everybody.